Hello everyone, I am ready with the new video, and in this video I am just discussing about the construction of a triangle. Before going to construction of a triangle, I just want to discuss the properties of a triangle. Simply, the definition of triangle is a simple closed figure enclosed by three line segments or three lines. We can say a simple closed figure enclosed by three lines is called triangle, in which we have total 6 elements which are basically we can have total 9 elements. So let us discuss what 9 elements are there, but out of those 9, 3 are included in the remaining 6. So that generally we say that there are 6 elements of a triangle. Let us consider one triangle ABC here. यहाँ पर जो triangle ABC है उसको हम लेते हैं. तो when we talk about the elements of a triangle means parts of the triangle. There are basically 2 things which we discuss. First one is sides. So in a triangle there are 3 sides. In this triangle particularly, the sides are AB, BC and CA. तो यहाँ पर जो साइड्स है उनको हम सिंपली AB, BC और CA लिखते हैं. In actuality they are line segments. So we should write AB bar, BC bar and CA bar, which is the correct notation for a line segment. But here in general we don't write the bar above the symbol of this line. So we simply write AB, BC and CA. These are the 3 sides. Second element which we consider here is angles. So as we know, the angles in a triangle are 3. So the names of these angles can be written in different ways. Like simply if we write ABC, this is a nice idea, but in certain cases we will be having 2 angles at the same vertex. In that case we have to use 3 vertex criteria for writing an angle. तीनों vertex का यूज करके हमको एंगल लिखना होता है. In that case, suppose we want to write the name of angle A, then we can write, we have to start the vertex other than A. अगर A का एंगल लिखना है by using all 3 vertex of the triangle, तो हमको A को छोड़कर बाकी 2 vertex जो है वहां से शुरुआत करनी है. Suppose I start with B, then this angle will be BAC. Means जो भी एंगल हम लिखना चाह रहे हैं वो सेंटर में आना चाहिए. So the name of angle A will be BAC, or either if we start from C, then it will be CAB. So both the names can be written here. Now for angle B, we can start with either A or C. So the names of angle will be ABC or angle CBA. ABC or CBA. So in center we have angle B. So this is the name of angle B here. Now let us come to angle C. Here the name can be ACB, and if we start from B, then it will be BCA. So this is BCA. So all these notations are same. In all we say we have total 3 sides and 3 angles. So total 6 elements are there for a triangle. But sometimes in certain books we get another consideration, that is vertices. यहाँ पर ये जो 3 points हैं A, B, C, they are also an integral part of triangle. So we write simply them as A, B, C. These are the vertices which are generally included in sides as well as angles. जब हम sides लिखते हैं और angles लिखते हैं, दोनों में ही इनको include कर लिया जाता है. इसलिए basically जब हम construction की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ sides और angle में interested होंगे. So this is how we go with the basics of the triangle. So to construct a triangle, here we can see that what we have discussed. यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 कंडीशंस है जो हमको मिल सकती है. इसमें 3 एंगल्स थे और 3 साइड्स थी. Out of this total 6 possibilities, to construct a triangle we need only, or we can say exactly
3 conditions. Means विथ टोटल 6 एलिमेंट्स है, उसमें से अगर हमको कोई भी 3 एलिमेंट्स पता चल जाएंगे तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ओनली वन कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल हियर, दैट इज इफ वी नो ऑल 3 एंगल्स, देन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट सच ए ट्राइंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर गिवन ओनली. मीन्स हमको कोई भी 3 लेना है बट मिनिमम वन साइड शुड बी नोन. अगर एक साइड भी अगर पता होगी तो वो कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है. सो लेट अस स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इफ ऑल 3 साइड्स आर गिवन. सपोज लेट अस टेक वन क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which AB is equals to 3 centimeter, BC is equals to 4 centimeter, and CA is equals to 5 centimeter. So here we have all 3 sides of the triangle. To draw any triangle, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे जिसमें कोई क्लोज फिगर आएगा तो सबसे पहले हमको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है. Without rough sketch we do not get an idea how to draw that particular triangle. तो रफ स्केच बनाने के लिए हमको सबसे पहले कोई भी एक ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ कर लेना है विदाउट एनी मेजरमेंट, एंड जस्ट राइट द डिटेल्स व्हिच वी हैव विद अस. AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter, and CA is 5 centimeter. Now by using this rough sketch we have to move further to draw an angle, the triangle which is we want to construct here. So we'll start with the base. कंस्ट्रक्शन जब भी ट्राइंगल का होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम एक साइड जो है वो पता होगी, तो यहाँ पर हमको हमेशा बेस जो होगा, जो भी साइड गिवन होगी उससे स्टार्ट करना है. So to draw any triangle we have to just simply use the base. Here the base is having 4 centimeter length. So let us draw a line segment of length 4 centimeter, and the name given to this line segment is B and C. So this is BC line segment having length 4 centimeter. Now to get the remaining vertex A, we have to draw an arc from B at a distance of this length, that is 3 centimeter. And from C, we have to draw an arc at a distance of 5 centimeter. Wherever these two arcs will intersect, that will be named as A. तो यहाँ पर पॉइंट B से हमको एक आर्क बनाना है. एन आर्क फ्रॉम पॉइंट B ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है. एंड फ्रॉम पॉइंट C वी हैव टू ड्रॉ अनदर आर्क हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो पॉइंट C से 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ किया. वी गेट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वील नेम इट एज A. नाउ जॉइन A with B and C so that we get a required triangle whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. So this is how we draw a triangle if 3 sides are given. अब कंस्ट्रक्शन में आपको डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें ये जो साइड्स है इनका नाम बदल जाएगा और इनकी लेंथ जो होगी वो आपकी चेंज हो सकती है. सो द स्टेप्स आर वेरी सिंपल. सिंपली जस्ट ड्रॉ अ रफ स्केच, and based on the rough sketch we have to start with the base. Then once the base is drawn we have to name the vertex of that triangle B and C. Here in this particular case the remaining vertex will be drawn by drawing two different arcs from the end points of this line segment, which is the base of the triangle. So this is how we start the construction of a triangle if two sides and the included angle. Means this time I am considering the situation where we have two sides and one angle which is in between the two sides. Included angle between the sides is known to us. So as I told you in my previous video that to draw any triangle or figure, whatever construction we want to do, we have to just draw a rough sketch of it. Let us start with this. PQR is the name of triangle which we want to construct. Here QR is 5 centimeter. The length PQ is 6 centimeter and angle Q is 60 degree. Now see, in this particular question the angle given is Q. Now suppose the angle
गिवन इज दिस, सपोज अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें 60 डिग्री नहीं है, सपोज ये एंगल नहीं दिया गया है, एंड दिस एंगल इज नोन टू यू, देन व्हाट वी कैन डू in that case? It is very difficult to draw that triangle, because in that case we should have this angle also, so that we can use this line here. So the situation I am considering here is two sides and the included angle. So this is very much necessary that the angle which we know here should be included angle. So here this angle is given as 60 degree. So we'll start with the base, as I told you in my previous video. यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो आपको बेस से ही करना है, and name it QR. The length of base here QR is 5 centimeter. So let us draw a line segment QR having length 5 centimeter. QR line segment आपने ड्रॉ की, इसके बाद आपको ये साइड जो है PQ, यहाँ से पॉइंट P अगर हमको लाना है तो 6 सेंटीमीटर का आर्क हमको ड्रॉ करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस केस में किया था जब तीनों साइड्स हमको पता थी. बट हियर द सिचुएशन इज डिफरेंट. उस केस में हमारे पास PR की लेंथ भी पता थी. नाउ वी डू नॉट हैव द लेंथ PR हियर, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल जस्ट सिंपली ड्रॉ दिस एंगल फर्स्ट. 60 डिग्री एंगल आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोटेक्टर. तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर का यूज करेंगे. आने वाले वीडियोज में मैं आपको विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर वी कैन ड्रॉ सर्टेन एंगल्स. कोई फिक्स वैल्यू वाले ऐसे एंगल्स होते हैं जिसमें 60 डिग्री सबसे बेसिक एंगल है, उसका यूज करके हम बिना प्रोटेक्टर का यूज करके हम कुछ एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो मेरे आने वाले वीडियोस में मैं उस चीज को भी इंक्लूड करूंगा. तो यहाँ पर हमको सिंपली 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है. सो लेट अस यूज द प्रोटेक्टर and draw. We have to keep that middle point of protector here and we have to measure. See, प्रोटेक्टर के अंदर दोनों साइड में इस शेप का प्रोटेक्टर होता है, यहाँ पे सेंटर होता है, और जो नंबरिंग होती है वो इधर से भी 0 होता है और इधर भी 0 होता है. So to measure any angle, suppose this point is kept here, then we have to measure the angle from this side. Means this side में पॉइंट पर मिडिल पॉइंट को किसी भी एंड पॉइंट पर रखने के बाद जिधर आपकी लाइन सेगमेंट है वहां से आपको मेजर करना स्टार्ट करना है. मतलब सपोज इसको हम यहाँ पर Q पर रख रहे हैं, दिस पॉइंट इज केप्ट एट Q, देन वी हैव टू मेजर फ्रॉम दिस साइड. सो द एंगल 60 डिग्री विल बी फॉर्म. सो यहाँ पर 60 डिग्री एंगल मैंने ड्रॉ किया. यहाँ सपोज वो पॉइंट आता है और मैंने इस लाइन सेगमेंट को आगे ड्रॉ कर दिया, तो हमारे पास एक एंगल बन जाता है जो कि 60 डिग्री है. लेट अस नेम इट पॉइंट X. यहाँ पर ये पॉइंट क्या है हमको P नहीं लेना है क्योंकि ये कितनी दूर है हमको नहीं पता. नाउ टू गेट पॉइंट A वी हैव एडिशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज द लेंथ ऑफ PQ इज 6 सेंटीमीटर. सो दिस एंगल वी हैव ड्रॉन इज 60 डिग्री. नाउ जस्ट ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट Q हैविंग लेंथ 6 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ आर्क इज 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस लेके आप आर्क ड्रॉ करेंगे. So this point which we get here will be named as P, which is the third vertex of this triangle. And as you know, if we have all three vertex, then we have to simply make it a closed figure. So join P with R. So we get this triangle PQR, which is the required triangle in which QR is 5 centimeter, angle Q is 60 degree, and this length PQ is 6 centimeter. If two angles and the included side is given, just like the previous video, in that case we have used two sides and the included angle. This time we are taking two angles and the included side. So as we know that we have to start with forming a rough sketch. जैसा कि हम जानते हैं कि हमको rough sketch बना के start करना पड़ेगा. So let us draw this rough sketch. We have a triangle XYZ, X, Y and Z. Now in which the YZ is 7 centimeter and the angle Y is 60 degree and the angle Z here is 70 degree. So this is a very simple construction. So let us start with the construction of the base. So let us draw a line segment YZ having length 7 centimeter, which is given as the base in the rough sketch. यहाँ पर रफ स्केच में हमने बेस माना है इसको. देखो अगर हम इस ट्राइंगल का नोमेनक्लेचर चेंज कर दें, मींस एक ऊपर नहीं लिखा होता YZ यहाँ आ गया, देन ऑल्सो वी शुड हैव स्टार्टेड विद द बेस एज
देन एक्स वाई जेड ओनली, ये अगर जेड पॉइंट इधर आ जाए, एक्स इधर आ जाए, सपोज this will be z and this one is x, then this 7 centimeter will be here, so this angle will go, angle z is 70 degree, this will go here. In that case also we have to just turn it and start with the same construction. So this is how we deal with the construction, and here the length is yz, that is base of this triangle, the angle y is 60 and the z is 70 degree. So to construct this triangle now, we have to just draw a line segment which is 7 centimeter in length, and at these 2 points y and z we have to draw this angle 60 and 70 degree respectively. So point y पर एक 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, आप यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं और आप इसको एंगल को ड्रॉ करेंगे. दिस एंगल इज 60 डिग्री. वी डू नॉट नो द exact point x till now, so we just name it a point A, which is here we are not using the name x because x is already in the question, so we'll use some different points. Then we have to draw angle z at 70 degree. So this time we have to measure from this side in the protector, and the angle 70 degree will be made by joining this point, and let us name this point as B. So this one ray we have drawn, that is BZ. Now these two angles, the line segments or the rays which are drawn by angle Y and Z, they are intersecting at a point. We will name this point as X, which is the third vertex of the required triangle. So here this angle is 70 degree, and we do not know the length of XY and XZ, but due to the angle formation we are getting a point of intersection here. So this is how we construct a triangle if two angles and the included side is given to us. So here the included side is base, and the base angles 60 and 70 degree are given to us. So this is how we deal with the construction of the triangle. If two base angles, it is better to write base angles here, and their included side is given to us. This is the construction of a important triangle, right angle triangle. यहाँ पर हमको जो कंस्ट्रक्शन है वो राइट एंगल ट्राइंगल का करना है. एज यू नो, द राइट एंगल ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल इन विच वी हैव वन एंगल इज 90 डिग्री. सो दिस एंगल इज 90 डिग्री. सपोज हियर इन क्वेश्चन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR in which right angle is Q. So this angle is Q. Then let us name it as P and R. So right angle at Q, so this angle is 90 degree of course, and then QR is 5 centimeter, and then one PR is given to as 9 centimeter. See here, as I told you earlier, that in different situations we can construct, if two sides are known to us, then we can only construct a triangle if included angle is given. But in case of right angle triangle, it is a different situation. Here we can construct a triangle if a right angle is given, hypotenuse is given, and any one of the two sides is known to us. Then the right angle can be constructed. So this is the rough sketch here. Then we have to start, as I told you again and again in every video, the question should be started with a base. So let us draw a base QR having length 5 centimeter. तो हमने सबसे पहले बेस ड्रॉ किया जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है. नाउ वी हैव टू ड्रॉ अ राइट एंगल एट पॉइंट Q. तो यहाँ पर Q पर आपने आपका प्रोटेक्टर रखा और राइट एंगल के लिए आपका एक पॉइंट ऊपर आ जाएगा. उस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे जो कि एक राइट एंगल होगा. लेट अस नेम इट एज X, and this angle is 90 degree. Now the two information is already been used. हमने दो information use कर ली, एक तो Q and then QR. One more information is remaining, that is PR. Now see, the point P is just on this line itself where we have drawn the right angle. Means QX पर ही कहीं ये point P आएगा जो कि point R से कितना दूर है, 9 centimeter. So from this point R we'll draw another arc. यहाँ R पे एक 9 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करना है जो कि QX को कहीं इंटरसेक्ट करेगा. दिस पॉइंट वेयर वी गेट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस आर्क विद द QX,
will be named as P, which is the third vertex, and as we know the triangle is a closed figure, so just join this P with R, and this length is nothing but 9 centimeters, which we have taken the radius of an arc. So this is a very simple construction where we know a right angle, one of the either perpendicular or base in that, and one is hypotenuse. This is how we construct the different possibilities in a triangle. In the first video we discussed about the construction of a triangle in which all three sides are given. In second case we discussed about construction of a triangle in which two sides and one angle was given. In third case we discussed a situation where two angles and one side is given, and in the last one where we have seen the construction of the right angle where one angle is right angle, one hypotenuse is given, and one of the base and perpendicular is also given to us. So this is the